Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar said the cabinet meeting took up 22 agendas including the issue of reservation. He emphasized that the government has worked to rationalize the reservation process, ensuring it is both transparent and fair. Abdullah noted that multiple topics were discussed but highlighted reservation as a key matter, reflecting the administration's effort to balance equity with clarity and policy decisions. कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना। अब बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&B डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूं, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस। During the Parliament Winter Session 2025, Congress leader Deepinder Huda highlighted the worsening air quality in Delhi, pointing out that party workers were compelled to wear masks inside Parliament. Huda said, "Today we are being forced to live in poisonous air. The country talks about it every winter, but everyone forgets about it by February." He demanded that the Prime Minister directly intervene to address the crisis, stressing that the issue of pollution cannot be ignored or treated as seasonal. His remarks underscore the urgency of tackling Delhi's hazardous air quality, which continues to affect citizens' health and daily life. ऐसी स्थिति आ गई कि हम जहरीली वायु में जीने पे विवश हो रहे हैं, और हर सर्दी में देश इस पे चिंता करता है, मगर फरवरी आते हुए भूल जाते हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए सरकार कुछ योजनाएं लेके अपना संसद के अंदर जवाब देती है, लेकिन कोई बजट नहीं दिया जाता। हमारी मांग है इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अंदर आगे आएँ। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो प्रभावित राज्य हैं, उन सारी मुख्यमंत्रियों का एक समूह बने, प्रधानमंत्री जी जिसमें शामिल हों, और व्यापक परियोजना देश के सामने वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए लाई जाए। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम जहरीली वायु में जीने पे विवश हो रहे हैं, और हर सर्दी में देश इस पे चिंता करता है, मगर फरवरी आते हुए भूल जाते हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए सरकार कुछ योजनाएं लेके अपना संसद के अंदर जवाब देती है, लेकिन कोई बजट नहीं दिया जाता। हमारी मांग है इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अंदर आगे आएँ। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो प्रभावित राज्य हैं, उन सारी मुख्यमंत्रियों का एक समूह बने, प्रधानमंत्री जी जिसमें शामिल हों, और व्यापक परियोजना देश के सामने वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए लाई जाए। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम जहरीली वायु में जीने पे विवश हो रहे हैं, और हर सर्दी में देश इस पे चिंता करता है, मगर फरवरी आते हुए भूल जाते हैं।
केवल खाना पूर्ति के लिए सरकार कुछ योजनाएं लेके अपना संसद के अंदर जवाब देती है, लेकिन कोई बजट नहीं दिया जाता। हमारी मांग है इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अंदर आगे आएँ। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो प्रभावित राज्य हैं, उन सारी मुख्यमंत्रियों का एक समूह बने, प्रधानमंत्री जी। Congress MP Shashi Tharoor, speaking in Russian President Vladimir Putin's visit to India, described it as a very important visit and emphasized the significance of India's ties with Russia. He underlined the principle of strategic autonomy, stressing that India must preserve its negotiating space with major powers like the US, China and Russia. Tharoor said that India cannot mortgage its autonomy to any other country's interests and must maintain independent relations with all, highlighting Russia as a war, serious and strong partner. He noted that the relationship has many fundamental interests at stake, making the visit crucial for India's foreign policy outlook. Well, it's a very important visit. Obviously, it's an extremely important relationship. We talk for a long time about strategic autonomy. We have to preserve our negotiating space with America, China, Russia. In fact, this is a subject that I'm about to speak on right now at a conference here in town at 12 noon. What I want to say very simply is, for us, we cannot mortgage our autonomy to any other country's interests. We have to have independent relationships with all these countries. And Russia is an old relationship, it's a serious relationship, it's a strong relationship, and one where obviously we have very many fundamental interests at stake. So I think we will have to see this relationship, how it moves after this visit, but it's a very important visit for our country. Well, it's a very important visit. Delhi Department of Land Resources Secretary Manoj Joshi highlighted the progress of the Naksha program, which has been underway for the past year. He explained that the initiative is aimed at connecting urban land surveys and creating new land records to modernize property management. Joshi noted that the Government of India is funding the program and providing the platform, while the Survey of India, state governments and private companies are collaborating to implement it. The effort is expected to bring greater transparency, efficiency and accuracy to land records, reducing disputes and improving governance in urban areas. पिछले एक साल से हम लोग शहरी क्षेत्रों में सर्वे करने के लिए, नए लैंड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए नक्शा कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उसमें भारत सरकार फंडिंग कर रही है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज सभी मिल के ये काम कर रहे हैं और एक साल में 157 शहरों में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे 1000 शहरों में नक्शा कार्यक्रम लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएशन का शहरों में लेंगे और करीब 5 साल में पूरे देश में शहरी लैंड रिकॉर्ड्स बनाने का उद्देश्य है हमारा। अच्छी प्रोग्रेस है अभी तक और इस आज की कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य सरकारों ने पार्टिसिपेट किया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि इश्यूज आए हैं और कैसे उन इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नक्शा में जो ड्रोन्स, रोवर्स, मॉडर्न सॉफ्टवेयर का जो उपयोग किया है, उस पहले जहां सालों लगते थे नए एरिया में सर्वे करने में, हम एक साल में ही एक शहर में सर्वे कंप्लीट कर पाएंगे। पूरे कंट्री में ये पायलट है, करीब 157 शहरों में कर रहे हैं। इसके बाद 1000 शहरों में एक साथ लेंगे। पिछले एक साल से In Etawah, Uttar Pradesh, Samajwadi Party MP Ran Gopal Yadav explained that the system of revising voter lists had always been in place. He pointed out that names of those who had passed away were removed, while newly eligible voters were added. According to him, the Election Commission provided a complete voter list along with a separate list showing new additions, deletions and corrections. Yadav mentioned that even minor errors such as spelling mistakes were corrected through this process. He emphasized that this practice was not new and had continued consistently, including during the time when Narendra Modi became Prime Minister in 2014. His remarks highlighted the continuity and transparency of the voter list management system. सन 52 से चुनाव चल रहे हैं
और जो लोग वोट डालते रहे पहले, आप लोग तो सब नई उम्र के लड़के, हमेशा चुनाव से पहले 1-1.5 साल पहले से रिवीजन होता था वोटर लिस्ट का, और जो लोग मर जाते थे उनका वोट कट जाता था, जो वोट डालने लायक उम्र हो जाती थी वोट बढ़ जाता था। लिस्ट मिलती थी, लिस्ट में पूरी सूची, वोट बढ़े हुए की अलग से सूची, परिवर्धित नाम कट गए उनकी अपमार्जित सूची, नामों में सुधार हुआ है, मान लो किसी की स्पेलिंग गलत कुछ था, लोगों ने कराया तो वो संशोधित सूची है सब लोगों की। ये हमेशा चलता रहा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने तब भी यही चलता था, कोई बात नहीं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी नीयत साफ, वरना इसकी आवश्यकता ही नहीं। वो तो रेगुलर एक कंटिन्यूएशन में ये चल रहा था, हमेशा प्रोसेस चल रहा था। अब उन्हें एक नया मुद्दा बनाया उन्होंने देश के सामने, है तो नहीं वो, ये घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना है। एसआईआर इसकी की जाए। बिहार में एसआईआर हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएं, तो मंशा इनकी नीयत साफ नहीं। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं, और एसआईआर के माध्यम से जिनका वोट नहीं बन पाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन सब के लिए यही कहा जाएगा कि इंट्रूडर्स हैं, हिंदू हैं तो नेपाल से आ गए, मुसलमान हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ गए। ये इनकी मंशा है, नियत में वोट है। इसलिए हम लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि सही तरीके से काम। In Chindwara, Madhya Pradesh, former Chief Minister Kamal remarked that the present condition of agriculture in the state was unfortunate. He explained that nearly 70% of Madhya Pradesh economy dependent on farming, making it a backbone of the region. Nath clarified that the issue was not simply about farmers owning tractors or maintaining pumps. Instead, it reflected the deeper reality of their struggles. He stressed that agriculture was central to the livelihood of the majority of the people, and the challenges faced by farmers directly impacted the state's overall economy. His statement highlighted the seriousness of the situation and the urgent need for attention to the agriculture sector. देखिए, आज जो हालात है कृषि क्षेत्र की, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये नहीं कि 70% किसान है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई पंप का मरम्मत करता है। तो आज ये हालात है, आप खाद, बीज, भाव, ये हालात आज मध्य प्रदेश में है। देखिए, आज जो हालात है कृषि क्षेत्र की, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये नहीं कि 70% किसान है, कोई ट्रैक्टर। In Imphal, Manipur, Major Rohit Nair stated that the Assam Rifles was organizing the second edition of the Director General Assam Rifles Men and Women Polo Tournament. He mentioned that the first edition had taken place earlier in January to February of this year. Nair emphasized that Assam Rifles had consistently been at the forefront of promoting and reviving Manipuri culture. As part of this cultural initiative, the force was hosting the tournament at the oldest and largest polo ground in Asia, which is also regarded as the world's most historic polo venue. He underlined that Manipur, being the birthplace of polo, provided a fitting backdrop for such an event aimed at preserving tradition and encouraging participation. The Assam Rifles to conduct the second edition of the Director General of Assam Rifles Men and Women Polo Tournament. The first installment was carried out in this year in the month of January and February, and Assam Rifles has been at the forefront of bringing and reviving the culture of Manipur.
So as part of it, we are conducting this tournament on the oldest and the largest polo ground in Asia, and in fact in the world. And Manipur is, as we all know, that Manipur is the origin of polo. So it's a privilege that we are conducting, and presently we have 38 teams which are going to participate in this tournament. It is going to be one of the largest tournaments of polo that is going to be held. And the tournament is from 5th December to 20th December. 5th we have the inauguration and the opening ceremony, and on 20th December we'll have the final match and the closing ceremony of the tournament. So we are anticipating a lot of audience and a grilling and a very enthusiastic tournament to take place on this ground. Thank you. The cash prize for the winning teams is going to be rupees 50,000, and for the runners-up, it's going to be 35,000. We also have various categories for cash prizes and awards. In that, we have the best discipline team, men and women, best pony, best player, men and women. And in fact, for the first time, we are also giving away cash incentive to the teams participating in this tournament. Also, we'll be giving away certificates, medals, and as for the trophies are concerned, we have the winner men trophy, winner women trophy, and runners-up men and women. The Assam Rifles to conduct the second edition of the Director General of Assam Rifles Men and Women Polo Tournament. The first installment was carried out in this year. During the Parliament Winter Session 2025, BJP MP Sambit Patra strongly condemned the Telangana Chief Minister Revanth Reddy's remarks on Hindu gods and goddesses. Patra said that whether it was Maulana Madani or Congress leaders, there were echoing similar sentiments, which he described as poison against Hindus. He criticized Revanth Reddy for suggesting that if gods themselves do not have a consensus, then people cannot have consensus either. Patra argued that such statements reflect the Congress party's deep-rooted bias against Hindu traditions and beliefs. His remarks added to the ongoing political storm, with the BJP leaders demanding accountability and respect for religious sentiments in national discourse. देखिए, मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म क्या है? ये सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। बैचलर के लिए हनुमान जी हैं, जो 2 शादी करते हैं उनके लिए कोई और भगवान है, कोई ऐसे भगवान हैं जो शराब पसंद करते हैं, कोई ऐसे भगवान हैं जो टॉडी पसंद करते हैं, वेजिटेरियंस दाल रोटी खाने वालों के लिए एक अलग भगवान है। ये किस प्रकार की भाषा है? रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, माँ दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं, किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। जनता जनार्दन त्रिशूल चला रही है आपके ऊपर, और कांग्रेस की लंका को ध्वस्त कर दिया है हनुमान जी ने। फिर भी हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, मौलाना मदनी हो At the India's World Annual Conclave 2025 in Delhi, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar emphasized that India cannot remain indifferent when conflicts arise globally. He explained that with millions of Indians working overseas, the government has a responsibility to act swiftly to safeguard its citizens. Jaishankar noted that the nation's systems are immediately activated whenever signs of conflict appear,
ensuring that measures are taken to secure people abroad. He underlined that India's foreign policy is not detached from the lives of its diaspora, but deeply connected to their safety and well-being. His remarks highlighted the proactive stance of the government in protecting Indians worldwide, reflecting the seriousness with which India approaches global crisis. So, for a country today which has really millions of people working abroad, we cannot afford to be impassive or agnostic when there is a conflict. So, it has become, in a way, for us, I won't even say it's a duty or obligation. We take it as a standard procedure that if there is a conflict, the moment we see that coming, our systems get ready to go to secure our people. And again, in the last 3 years, and I'm talking after Ukraine, Ukraine, roughly we brought back 20,000 people. In the last 3 years, we've actually brought back 28,000 people from different conflict zones. So this kind of gives you the kind of scale of the responsibility which happens, when you have a mobile global economy and a mobile workforce which is operating in that. So for a country today which has really millions of people working abroad, we cannot afford to be impassive or agnostic when there is a conflict. So it has become, in a way, for us, I won't even say it's a duty or obligation. We take it as a standard procedure that if there is. At a cultural event in Delhi, former Secretary in the Ministry of External Affairs and seasoned diplomat Agidisha Sharma expressed her delight at being part of a distinguished panel. Sharma, who has served as ambassador to the Uzbekistan, High Commissioner to the Australia, Fiji and Pacific Islands, and Consul General in Ukraine, humorously remarked that he wondered if his presence was even needed among such eminent speakers. He praised Sanjay Roy, calling him a well-known figure in cultural circles and a valued friend of the MEA. Sharma also extended warm congratulations to the Dr. Anthony Das and Mrs. Vidushi Dugal for the successful release of their new book, highlighting its importance in cultural diplomacy. I'm absolutely delighted with such a star-studded panel, and in fact I asked High Commissioner, am I really needed, with such a star-studded panel? And Sanjay Roy is very familiar in all the cultural circles and certainly a great friend of Ministry of External Affairs. And of course, Dr. Anthony Das and Ms. Vidushi Dugal, congratulations on bringing out this book. It's so readable. I mean, the first thing that I thought is, you can just read it, something you can carry on a train, on an aircraft, anywhere you can read, It's not a heavy read, and yet it's so informative. It's really, it's one of those once in a lifetime type of thing. You come up with an idea and it clicks, And so I congratulate you. You have given a very thoughtful prism through which, we can look at Sri Lanka. And right at the outset, I noted somewhere it's written that this book is meant primarily for Indians. There is a line there. I did my eyes, there is a good reason for this, although others will also enjoy, because our emotional and sentimental levels are such, we understand each other very easily and quickly. So we need a book of a different kind to hold our interest and, to enable us to see Sri Lanka in certain ways. So, it made me think, it really made me think, and that's what today I'm going to talk about, that I've only been in October to Sri Lanka, but that was not my first connection with Sri Lanka. You have actually suggested that we all start introspecting and thinking about our own connections in normal life. How do we relate to Sri Lanka? So that is something that is the theme. In Gorakhpur, Uttar Pradesh, Additional Director General of Police Muta Ashok Jain revealed alarming statistics on suicide cases. He stated that in 2021, 591 suicides were reported, while the number has surged to the 1,007 this year. The ADG emphasized that the increase is significant and concerning, warranting deeper investigation. Authorities have prepared district-wise and gender-wise lists to better understand the trend and identify vulnerable groups.
Jain stressed that the matter requires further study and analysis to determine underlying causes and to develop preventive strategies. The sharp rise has raised concerns among officials and communities, highlighting the urgent need for mental health awareness and support systems across the region. ये प्रेस मीट इसलिए बुलाई गई है कि एक विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैंने कुछ आंकड़े संकलित किए थे गोरखपुर जोन के संबंधित, आत्महत्या से संबंधित, तो जो मैंने आपसे अभी शेयर किए हैं जनपदवार और स्त्री पुरुष और पिछले 5 साल यानी कि 2021, 22, 23, 24 और 25 में इस वर्ष तक जो भी हमारे पूरे जोन में, जोन के 11 जिलों में जो आत्महत्याएँ हुई है, जो पुलिस के पास रिकॉर्ड में है, उस रिकॉर्ड के आधार पर ये सूचना संकलित की गई है। इस सूचना के अनुसार वर्ष 21 में 591 कुल सुसाइड हुए थे, जो कि बढ़ते बढ़ते इस वर्ष में अब तक 1007 हुए हैं। तो जैसे कि आपने आंकड़ों में स्वयं देखा है कि लगातार आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर हमने उसको फिर आंकड़ों को जनपदवार और स्त्री पुरुष में भी सूचना बनाई है। तो कुल मिलाकर वृद्धि काफ़ी है, जो कि अध्ययन का विषय है। इस संबंध में मैंने सभी जनपदों को सचेत करते हुए एक पत्र लिखा है कि किन थानों में आत्महत्या के प्रकरण ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर Authorities in Morbi, Gujarat have imposed strong security measures following the demolition of an illegal mosque structure. Superintendent of Police Mukesh Kumar urged residents to remain calm and avoid spreading or believing any rumors. He assured that the police are fully prepared to handle any situation and emphasized that citizens can reach out to the police control room, SP, DYSP or local PR if issues arise. The move comes amid heightened tensions with law enforcement working to maintain peace and order across the district. Security forces have been deployed in sensitive areas to prevent unrest, and officials continue to monitor the situation closely to ensure stability. डिस्ट्रिक्ट के सभी वासियों को हमारा एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी अफवाह से दूर रहे। पुलिस जो है वो हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब सफिशिएंट है, और कोई दिक्कत आए तो पुलिस कंट्रोल रूम, SP, DYSP और लोकल PI जो है उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट के सभी वासियों को हमारा एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी अफवाह से दूर रहे। पुलिस जो है वो हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब सफिशिएंट है, और कोई दिक्कत आए तो पुलिस कंट्रोल रूम, SP, DYSP और लोकल PI जो है उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट के सभी वासियों। That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News. This is Dr. Shantan Palwai, consultant orthopedic surgeon. I'm Dr. Rohit Kiran Fadnis. I am a consultant general surgeon at Image Hospitals. In this camp, we would like to advise you about your various problems concerning your ligament injuries, joint replacement surgeries, and